Inactivity serves no purpose whatsoever. The devil back! Escape! There's no escape! On to oblivion! Be still. Shine down! Now you shall perish! There's no escape! No, my soul! Ring cutting! Lots of danger. Illusion shattered! Inazuma's time to turn! Be still. Get out of your dream! Shine down! There's no escape! Rain outlines your body. Now you shall perish! The devil's back! Escape! Torn
to oblivion! Mind the danger. Inazuma shines eternal! Look at you! Escape. Kamisato of it. Suyu. Illusion shadow! Be still. हेलो ओम भाई, गुड मॉर्निंग। संडे तो लेट से उठे क्या? Shine down! Torn to oblivion! No, my soul! Escape. Illusion shadow! हाँ, आर्कॉन भाई के इस पे डाल दिया मैं। हाँ, डस्की के इस पे सेल्फ प्रमोशन है तो नहीं, मैं देखा चेक किया तो नहीं दिखा मेरे को। डस्की के इस पे बोला था ना तुमने? कहाँ यार, मस्त सोने वाला था, भाई का कॉल आया और पूरी नींद खराब कर दी। हो गए ना अभी, और कितना सोएंगे हम भाई? इतना तो टाइम हो गया। रुको देखता, फिर मेरे को दिखा नहीं लेकिन सेल्फ प्रमोशन का डस्की का इस पे, जेपेक्स का इस पे है क्या? ये कुछ काम के नहीं।
ये भी काम का नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ अच्छा मिले नहीं मेरे को आर्टिस्ट, बकवास ही मिले सब। भूता तुम्हारी बढ़िया हो गई क्यों? इसमें भी बकवास, इतने खराब आर्टिस्ट दे रहे लोग। बीजीएमआई खेलने के लिए मेरी आईडी लिया उसने? अच्छा तुम्हारे भाई ने? तुम नहीं खेलते क्या अभी बीजीएमआई फिर? दोनों पे है? नहीं ना, दिखाई नहीं मुझे। तुम बोल रहे हो हम भाई, लेकिन मुझे दिखा तो नहीं। एपेक्स पे दिखा मेरे को, डस्टी का इस पे नहीं है। नहीं दिख रहा है। नहीं रे, क्या है गायरों की दिक्कत के कारण नहीं खेल पा रहा। अच्छा हाँ, फिर लेकिन तुम्हारा फोन में गेंशिन चलता है, फिर तो बीजीएमआई तो आराम से चल जाएगा यार। गेंशिन तो कितना बड़ा गेम है। अब मैं आईफोन पे खेलता फिर भी मेरा गेंशिन ये होता, मतलब कभी कभी लैग मारता है, स्लो चलता। तुम तो पता नहीं कैसे फोन पे खेल लेते। दो ही थे कहीं तो। हाँ अभी डाला जस्ट। अरे ये बटरफ्लाई मिली मिस हो गया। तो ये तो मिलेगा। कान्हा कहाँ लगाया फोन? अरे कान्हा भाई वेलकम, गुड मॉर्निंग। कान्हा भाई तो खेलते ही रहते, मेरे को कान्हा भाई कभी भी ऑनलाइन ही दिखते। कान्हा भाई का आईडी इतना अपग्रेडेड होगा। कौन से लेवल पे कान्हा भाई? 57 है शायद, हाँ। तूने तो बोला तुम फोन करके। 42 to 30। कान्हा ने लास्ट टाइम ही नोवेलेट लिया था ना, पहले को आया था तब शायद। अरे साउंड कैसा आ रहा है ओम भाई माइक का? नहीं अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी आईडी पुश करने टाइम है। डेलीज तो कर ले पहले, डेलीज अभी ये क्वेस्ट करता ना, उसके साथ डेलीज हो जाएगा ना। अभी ये क्वेस्ट करता मैं वो, ये सेव हो गए थे ना मेरे।
रेजिन तो इसलिए पहले वो डोमेन कर दिया मैं। अब प्रो लोगों का रिव्यू करना पड़ता, प्रो लोगों की जानकारी तो होना। आजू ऐप भी है क्या तुम पे? बाप रे, इतने सारे कैरेक्टर मिलते कैसे तुम लोग को? मेरे को मिलते ही नहीं कैरेक्टर। ओम भाई के पास तो इतने कैरेक्टर हो गए अभी। ओम भाई का फुल लक चल रहा। मैं आया मेरे डेलीज करके, ये टाइम पे मैं मेरे डेलीज करता हूँ। आ जा आ जा। साइमन देखो ना, भुक्कड़ कुछ भी खाने को रेडी होता। खेलना पड़ता उसके लिए। हाँ वो भी बोलना, 2 मंथ गायब था मैं तो। 100 तो विश हो जाने थे मेरे, अगर मैं खेलता था 2 मंथ पूरा। एक हीरो, एक 5 स्टार हो जाता था मतलब मेरा। कुछ नहीं, बस हार्ड पीटी में जाके मिलता है। कुछ भी बोलते कान्हा भाई, तुमको भी जल्दी जल्दी मिलता होगा। इतने सारे कैरेक्टर ऐसे थोड़ी जमा करके रखे तुमने। जल्दी मिला होगा इसलिए इतने सारे हुए। तू और मैं साथ में खेलना शुरू किया था, और अब तेरी आईडी मेरे आईडी में कितना डिफरेंस है देख। कान्हा से, हाँ वो भी है। मेरा खेलना ही नहीं होता है ना इतना, वही तो हूँ भाई। और मैं पाल वर्ल्ड भी स्टार्ट किया, उसमें भी इतना चालू है मेरा भी पुश करना। वो भी स्ट्रीम करूंगा फिर आज थोड़ी देर से। एंड मेरे को तो काजू पे हार के 5 पीटी में काजू मिल गया। बाप रे बाप। मेरा 22 हो गया, लेकिन काजू नहीं मिला अभी तक की। कान्हा भाई का भी लक चल रहा है मतलब। मेरे को काजुआ चाहिए था और मिलता ही नहीं, जो हीरो चाहिए वो मिलता ही नहीं। इतना नीड था मेरे को काजुआ का। सपोर्ट तो अच्छा नहीं है मेरे टीम पे तो कोई। वो मस्त सपोर्ट है। भाई वन पीस का फिलर एपिसोड दिया आज। हद, हद है भी, कितना टुक्की गिरा यार, पूरा मजा खराब कर दी। हाँ अरे आज मैं सवेरे, मैं भी मॉर्निंग में उठते से देखा, इतना मूड खराब हो गया। मैं बोला क्या दे दिया ये। मैं 2 वेबसाइट पे चेक किया, मैं बोला एक वेबसाइट पे क्या ऐसा शो ही नहीं कर रहा था कुछ भी। तो फिर दूसरा वेबसाइट पे भी चेक किया, मैं बोला ये वेबसाइट कुछ बंद हो गया होगा या कुछ। तो एपिसोड ही नहीं आया। मैं बोला इतना खराब, पूरा मूड ऑफ हो गया आज। आज इतना मैं बोला आज मस्त देखेंगे, इतना वेट किया था आज का एपिसोड में। क्या बात कर रहे? टेलीग्राम पे भी आता है क्या? मैं तो साइट पे देखता है, डायरेक्ट आ जाता ना साइट पे।
ओम भाई तुम्हारे स्टोरी क्वेस्ट अभी कुछ बचे नहीं होगे ना, सब खत्म ही हो गए होगे। ऑटो में चलने दो इनको। कावर्डली फाइंड अ वे टू डिस्ट्रैक्ट द कावर्ड। डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कैसे डिस्ट्रैक्ट कर। Disappear! डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, डिस्ट्रैक्ट कैसे करूं। पूरे इधर से तो वापस जा रहा हूँ। हट, गलत हो गया। अरे मैं तो मेरे करंट में कितने ऑनगोइंग चालू है, देखो माय हीरो एकेडमिया चालू है, और वो स्लाइम का एक चालू है, द आई गॉट ट्रेन कार्डेड एज अ स्लाइम। उसके बाद वो और एक नया एनिमी आया फाइटिंग का, वो भी चालू है मेरा। मेरे तो इतने खुद के मेरे बहुत चालू है, लेकिन वो साइट पे उससे भी इजी जाता है, क्योंकि साइट पे सीधा दिख जाता है। मैं तुमको बताऊंगा साइट पे कैसा है, डायरेक्टली दिख ही जाता फ्रंट पेज पे कि आ गया करके। वर्ल्ड क्वेस्ट वैसे सिमरन फाउंटेन के फिर रास्ता कहाँ पे गया मैं भूल गया। हाँ पहला एपिसोड तो पहले का ही दिखाया, अभी सेकंड एपिसोड आया ना, सेकंड एपिसोड में शायद नया दिखाया होगा, मैं देखा नहीं सेकंड एपिसोड। डिस्ट्रैक्ट कैसे करूँ अभी इसको। इधर से जाना पड़ेगा शायद। अरे हाँ इधर बॉम्ब है। हाँ विंड ब्रेकर देखा, बेस्ट एनिमी है, न्यू आया एपिसोड। हाँ हाँ वही वही वही, बराबर नाम याद है ओम भाई तुमको, क्यों मैं नाम भूल गया था। कहाँ से जाना पड़ता है इसमें, यहाँ पे कहाँ से जाना पड़ता है ओम भाई, याद है क्या तुमको। यहाँ से जाना। अच्छा ऐसे पहले क्लिक करो फिर। अच्छा ऐसे होगा ये, अभी होना चाहिए। हाँ वार्निंग मिशन ट्राई ट्रिगर्ड इंक्लूडेड। और वही तो बोले सेफ डिस्टेंस से छोड़ना पड़ता। क्या तेरे न्यू ने दिखाते मेमोरीज दिखा रहे, वो न्यू ने ही बताया कि मेमोरीज दे करके। अच्छा मुझे लगा नया एपिसोड आएगा शायद, फिर बाद में आएगा शायद, थोड़ा टाइम में आना चाहिए उसका भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग चालू है अभी। अरे यहाँ पे भी बैरल है। Another test subject. Suffocate! कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को यहाँ पे क्या करूँ तो।
बाप रे बाप, होगा नहीं लगता मेरे से क्वेस्ट, कहाँ देखना पड़ेगा मेरे को। ये तोड़ना ही नहीं पड़ता शायद। हाँ ऐसे है वो। बाप रे बाप, फालतू टाइम वेस्ट हो गया मेरा, इतना दिमाग खराब। अरे कुछ नहीं, क्वेस्ट में अटक गया था बार बार वही जगह पे। बोला क्या है क्वेस्ट का, फिर अभी पता चला है। हेलो पैर बॉय, गुड मॉर्निंग। अरे पानी पीने गया था मुंबई, आ गया। I wasn't waiting for you. ये I'm क्या just बोलते, happy. देखना पड़ेगा। सर्च फॉर एविडेंस ऑफ द क्राइम। कहाँ पे ढूंढूं, किसपे है के ऊपर में होगा शायद। और कहाँ पे, और यहाँ पे भी एक चीज।
Produce the evidence and piece through the web of life. Investigate. क्या एविडेंस है? एविडेंस तो कुछ मिल रहा है भी नहीं। यही है शायद। Now you shall perish. Good. जल्दी जल्दी स्किप कर लेता है, इनकी बातें भली बोर होती। बहुत टाइम हो गया गेंशिन नहीं खेला, आज खेलना पड़ेगा। क्यों, क्या बात हो गया? आप पे गेंशिन बंदे हो पैरा बॉय? मेरा भी 2 मंथ से बंद था वैसे, अभी अभी चालू किया मैं, 3-4 दिन हो गया। तुम क्यों गेंशिन बंद कर दिए थे पैरा बॉय? गो टू न्यू कैंटन अंडरग्राउंड में भेजा लगते हैं। A tea party must have please complete it first. Finally on the right path. ये क्या हो रहा है? The quest location is currently not the quest. Tea party must have please complete. अच्छा, दूसरा quest complete करो बोलता था। अच्छा, ये वाला। अभी जॉब कर रहा हूँ तो टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, फिर समझ सकते हैं। डेलीज कर लिया करो वो थोड़ा टाइम, मतलब प्राइमोस तो भी सेव होता रहेगा, फिर जब भी ओपन किया तुम कैरेक्टर ले सकते हैं। डेलीज कर लेना, नहीं तो कोई दोस्त को आईडी दे दो, उसको जो खेलता होगा उसको बोलो डेलीज करके रखा करो। यानी फिर आप तुमने जब भी ओपन किया मस्त कैरेक्टर ले सकते, बाद में कभी गैप होके भी ओपन किया तो फिर। Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging here? Huh? Who are you? Paimon doesn't recall seeing you before. Like a blonde traveler and a chatty little fairy. Looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Ros- Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Most of the time. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia.
Monsieur Novelat wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Novelat? He wants to see us again already? Huh. He talked so much the last time I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Novelat in person. If you say so. Now that I've delivered the message. Thanks! We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we... ये तो आर्कन क्वेस्ट ही स्टार्ट हो गया। अभी कल ही लाइव स्ट्रीम में 300 प्राइमर्स मिले, उसमें काजो मिल गया। क्या बात कर रहे, 300 प्राइमर्स में काजो मिल गया आपको? कितना पुल्स में मिल रहा है? मेरे को भी चाहिए काजो, लेकिन क्या मिल ही नहीं रहा। कितने से हो गया? 10 पुल्स हो गए, लेकिन 22 की पीटी है, मुश्किल है काजो मिलना। तुमको कितना पीटी पे मिला काजुआ? क्या बात कर रहे, 580 पे? अब वही काना को भी 580 पे, तुमको 580 पे? भाई काजुआ सबको बाय ट्रैक किया। I did send someone to fetch you. ठीक है, मेरे को ही नहीं मिल रहा काजुआ। I do indeed have something I'd like to ओम ask भाई you को to कितना do. पीटी पे मिला है क्या पता? ओम भाई को भी बहुत Should जल्दी wait मिला है until लगता after I काजुआ। tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is... If I'm understanding you correctly, the Snezhnayan harbinger known as the Knave, I heard that she was originally from Fontaine. I sincerely advise you to refuse her invitation outright. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Chuck. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation. No, we shouldn't. Oh? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily... It's like a fight between two friends. मैं हर बार काजुआ बैनर पे 50-50 हारा था वर्जन 1.6 से। Isn't it फाइनली possible मिल that गया the क्या? friendship could end entirely? Though diplomatic काजुआ बढ़िया है यार, काजुआ होना ही चाहिए टीम पे। मतलब काजुआ किसी पे भी कोई भी टीम पे चल जाता नहीं, इसलिए होने होना वो। It was just an analogy. And Moreover, even if we were to talk in person, we don't have sufficient information. फिर काजुआ फार्म कर लिए क्या पैरा बा? The result wouldn't be restored. I don't think we should overthink those possibilities yet. Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join a meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. Lady Farina, could there be something else regarding... No, not at all. Look, I am the Hydro Archon of Fontaine, Thusalor, the god of justice who is loved and adored. So I only hope that 20 level का ही है अभी भी। Don't overthink it. मैं को जो अगर मिला बोलने से मैं तो उसको पहले फार्म करूँगा पूरा मैक्स लेवल। उसका सिवा किसको हाथ ही नहीं लगा होगा। Officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. अरे यही कैरेक्टर आ रही है ना? I assume you अरे हाँ, see ये the कैरेक्टर आ same रही है way, अभी। Miss Farina. आरसी लो ना, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं इसको। Lady Farina? Yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should too make this tea party even more lively
It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Yuda. Hello. The pleasure. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of. Oh, I'm not referring to when my children, Minnie and Lynette, the children of the House of the Hearth are often misunderstood. Perhaps due to the reputation. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child. Yes. It appears the ever-busy Yudex doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. इनके words इतने hard है ना pronounce करना. As well as the Tui Harbingers, Child and I have कुछ भी always words दे देते. Were नाम तो anything इतने to happen in difficult देते. Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to... The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Child and confirm. It's not like you couldn't even manage to fulfill a About that. The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, The knave showed up already? Well, Lenny did say that Father will be returning soon. We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I also noticed that Lady अरे यहाँ Fern तो acts a little odd पहचान and के लोग unnatural दिख रहे whenever हैं. I bring up matters अरे related to the नमस्ते रीना भाई, welcome bro. Could the knave be threatening Lady Farina or something? If that were the case, why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of Paraboy a Hong गद्दारी कर भी. So maybe In reality, this problem is Paraboy हर even more जगह thorny. The है. details are still Paraboy कहीं भी unclear. मिल जाएगा तुमको. We cannot rule out an escape, but there have also been no Stream reports पे that क्यों नहीं special आते अब? guards oversee the fortress. I was वो only थे ही going to नहीं share बोलते this पैराबॉय. information. हमको बता रहा था अभी कि you मतलब see us about खेलते ही नहीं before. ज्यादा, ऑनलाइन ही नहीं थे करके. Yes. I would like this was my the knave did not see. So that means we bought ourselves some time. Firstly, you're already acquainted with Child. अरे And भाई इनके secondly, स्ट्रीम पे भी it's बोलते the हैं दादा. consideration of the union. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The fortress of Meripede is not affiliated with the court system. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals आपके still स्ट्रीम include पे आता exile, हुआ. just as the fortress of Meripede was पैराबॉय seen को as जॉब prison, के अलावा भी और but it ड्यूटी should in लग गई fact अभी be पीछे. regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help. Although I do have a personal relationship with the administrator there, पैराबॉय को neither संडे को भी myself आराम nor नहीं, the अभी काम ही courts have the काम. right to be directly involved with the investigation. मैं भी Neither नाश्ता house- करके स्टार्ट करूँगा. Gets it now. तो मैं भी ज्वाइन करूँगा अरीना भाई, अगर मेरी स्ट्रीम जल्दी I खत्म हो will गई arrange तो. false charges मैं भी आ against you जाऊँगा. so that you may secretly invest. So, are you two willing to accept my proposal? Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best choice. You two have my sincere thanks. We will rendezvous अभी with the जल्दी fortress सोना of पड़ता Meripede's है entrance on भाई. Erinius once you've prepared हाँ, yourselves. जॉब का वजह से ना तुम्हारा. Sounds. Is there something we... Perhaps you could enjoy a good meal and have an... Oh, right! I'm... Please do not worry.
Since you are sacrificing both your time and quality of life, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff. Now that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of... Go to cafe notice. कौन सा कैफे है क्या पता. पास में है लगता है. इधर भी ये वाला क्वेस्ट है लगता है. What's the big rush? कितने बड़बड़ कर रहे हैं कहाँ पर आप. जल्दी जल्दी आगे बढ़ता. हो गया इनका. पहले आर्कन क्वेस्ट ही करते. That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we were about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine. Just to avoid breaking any strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves off to the Fortress of Meropide. Maybe this is what they call fate. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. Oh, what is that I hear? Star-Lord भी है Hey! You can't hear a taste. And what are you doing? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here. Calm down, calm down. This is nothing.
As a journalist, you should be used to this by now. You know we never mind. No way! We would never! Oh no, Paimon almost forgot that Neverland told us to keep it a secret! Huh? Oh. You mean Paimon really did something that sorry. Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Oh, right. About that, Oh, it's nothing difficult. All you have to do, he was awarded the honorary title. On top of that, the Fortress of Meripede. Oh, if I could write an you make it sound easy. Of course. I wouldn't ask you to do it for free. Alright, you got a deal. We'll do it. Then it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? Finally, we will at the entrance of the fortress. So let's get going. Wait. Paimon just said something really इधर भी obvious. वर्ल्ड क्वेस्ट है, ये बात नहीं करना पड़ेगा। इतने सारे वर्ल्ड क्वेस्ट पेंडिंग में मेरे को नहीं पता था। ट्वेंटी पे 2 20 मिलेगी। बाप रे बाप, इसके पीछे तो कभी आया ही नहीं, ये पता नहीं था मुझे। क्या खतरनाक है। फोटो लेंगे, फोटो का ऑप्शन डालें। Alright, Neverland, we're ready. Is this where the entrance? You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the Fortress of Meripede from Araneus. Careful. Whoa! So you have to go down from here? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths. The Fortress of... But do not worry. It is not nearly as frightening inside. Paimon hopes you're right. Oh, and there's one more thing. Yeah, we heard about him too. Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him, or the Duke rarely ever leaves the Fortress of Meripede. But that does not mean he is... All right. It's about all... Don't worry, we won't let you. Good. I'm here. Please follow me, you two. I'll... No involvement in other quests, current quest to the stars standing in the depths. Progress cannot be met and I remember output. the look on my retainers' faces when I informed them of my plans today. ऐसा भी होता है, ये फर्स्ट टाइम देख रहा They हूँ। must have the दो courage to say क्वेस्ट anything in opposition. ओवरलैप हो गया। Yes. कंटिन्यू This was करंट क्वेस्ट।
Are we already underwater now? Huh. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. कहाँ पे मैंने कहा Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I get to see every day are the new inmates. Well, have you tried service with a smile? Who knows, it might help your... Yeah, right. As if. Every criminal comes through here looking... Even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment. Oh, she's got a point. Well, I finished transferring you. You two will register here. Yep. I'll take it from here. Okay, let me see. You are the Traveler in Paimon. That would be us. Let me confirm your charges and sentence. Let's see. Eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Huh? Wait, you mean the cake that... No... Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some sick. And considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro. Now I've seen everything. Anyway, please stand in front of the board over there. Oh, all right. But be sure... And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days! You two are the new inmates, right? Oh, okay. Save it. Not like I'll remember your names. So, are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here? Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? This is exactly why I can't stand new fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupon?
Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But Mora means nothing here. Here, we use credit coupon. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone no matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new... I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize truth, and this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served it. Oh, so that's what the Fortress of Meripede... It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling... Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Why aren't you answering? I've told you enough for free. So all you care about is more... Almost there. It's down through here. Payment unlock to it. 5 primers. I'm sure I've forgotten something. Not to worry. I'll simply send someone to fetch it. As soon as I remember what it was. इधर से नीचे जाओ बोलते हैं कहाँ जगह इधर से लगता नीचे और नीचे जाते हैं हाँ लिफ्ट से जा रहे हैं नीचे So, we're going even deeper now? Just how deep down are we? It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. एम्बुलेंस इतनी गड़बड़ी है So this is the actual entrance to the Fortress of Meripede? Huh. It looks like there are other new arrivals, too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. Oh, right. We're on someone else's territory now. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Hey! Don't scare Paimon! Oh, Paimon's not ready for all this! Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but... You wouldn't have happened to anger someone important, did you? Someone
someone important? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. What was that all about? Wait a second. Are there usually so many garter maps around here? They're already onto us? Prisoners number 7459 and 7560. So what did Welcome. this do? Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Gardamex come. Wait, you know about our connection with Nerva? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you, and as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite. The Duke! Greetings, Your Grace! Lovely weather today! अच्छा ये ड्यूक किसको ढूंढ रहे थे अपन Oh, greetings. मिल भी गया my तो good अच्छी fellow. बात है Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. My profuse apology. So this is the Duke. It's the Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome, right? Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed fate during our last work. When you return to your bunk, you'll find the guards have issued some Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't... Well, I believe that concludes the introduction. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Please, follow me. To make... He's going to personally give us a cure? No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright. There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. Is it really okay for the warden to think like that? We're... Well, then, maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meripede, Now, we've arrived at a very important place. The Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. welfare meal? You mean it's... That's right. Criminals are essential to Fortress operations, so you must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost you credit coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you have to go to work hungry until you earned enough coupons. It was only after His Grace became the administrator that we got the... Now everyone gets a square meal every day, even no good... In the Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. That would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work... Your Grace's reasoning is correct, but whatever the case, hard work is rewarded here. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems to... Let's continue this way.
This place is known as the Pancration Ring. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want. Pancration matches? And you can earn extra coupons? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring. Of course, the fees are also quite huge. Oh. Do you mind if we ask what they're... Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration? Oh, no. I was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we could start a business here? That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Your Grace. Good morning. I mean... What time indeed? Time waits for no one, so... Jeez. That guy's so nervous he almost forgot to breathe. These are the dormitories, which is where inmates sleep. In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it... Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. If you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other... Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us to our faces that it's okay to skip... The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn it. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Font. Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences, Mumbai but also I am a back. machine factory. अरे welcome back There's no Om need भाई. for me to get into हो specifics गए क्या about the dailies? production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. तुमको तो क्वेस्ट ही नहीं होगा डेलीज खत्म करने को. इसलिए डेलीज अलग से करने पड़ते क्यों ओम भाई? The tour continues over this way. अरे लिन क्या नाम है इसका? लिनी. हाँ. Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired. यार मेरे को सिर्फ एक अच्छा HPN सेंड चाहिए न्यूवी के लिए, फिर मेरा न्यूवी बिल्ड, फिर काजुआ. अरे आर्टिस्ट में तो जो चाहिए वो देते नहीं ओम भाई, तुमको तो पता है आर्टिस्ट का बहुत मुसीबत है. आप सेपरेट करना पड़ता है. हाँ बाद में वही दिक्कत है ना. लेकिन 4.6 आने से फिर कुछ दिन आप कर सकते साथ में, वो भी अच्छा है. फिर
ये कैसी एरिया है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। टेलीपोर्ट पॉइंट कहाँ है इसका? मेरा मूवी देख। हाँ, 1 मिनट इतनी स्टोरी होने दो। ये कौन सी कैरेक्टर है? ये भी आएगी शायद फिर बाद में। Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure Not yet, unfortunately for you. डॉक्टर है Then ये, you must be here for those हीलर two. होगी फिर Allow शायद। me to introduce you. Iron This Man is the film। infirmary, and Sijween here is the... Hello, Sijween. new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself. Since you seem to have some rare downtime with... Thank you. Oh, so the cure word is... I believe I've already covered the primary... I seldom conduct... Then let's head... थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते दिए। Go to the coupon cafeteria to get some food. अच्छी जगह है सोने को, देखो सामान भी रखने को है बस। इतनी भी खराब नहीं दी इन्होंने, बेड भी दिया है क्रिमिनल के लिए। सोचो, क्रिमिनल के लिए इतनी सेवा है इनकी। मेरे को मिलता वैसे देख के, बट मैं गैप दूंगा आरटी को। कल से मोरा एंड बुक फार्म करूंगा हफ्ते भर, क्योंकि खत्म है मेरा। अच्छा, मूवी का तो तुम्हारा ये हो गया इंसान सेकंड फार्म, टैलेंट वगैरह तो हो गया ना। The world एक मिनट remains चेक करने में constant तुम्हारा in मूवी देख के। भाई का पे 31,000 HP हो गई है, बाप रे बाप। 33,201। अरे अच्छा है, फिर तो अच्छा डैमेज देता होगा अभी तो। एनर्जी रिचार्ज 97 ईआर का लगता है कि इसको सैंड, इसका ईआर का नहीं लगता ना शायद, लेकिन सैंड तो। अटैक 6 डैमेज, क्रिट डैमेज मस्त मिले इसमें। इसमें ये थोड़ा और अच्छा हो सकता है एचपी का मिलने से। फार्म करो और बढ़ेगा तुम्हारा। अच्छा ये सही है, 9 तक के क्रिट रेट मिला है। और फार्म करो भाई। और बाप रे, टैलेंट इतने जल्दी बढ़ा दिया गया, 999 कर दिया टैलेंट। इसका भी 698 कर दिया गया। ये कौन है? टीचिंग 666 किए गया तुमने 80 लेवल तक के। होता कितनी है? 42203। बाप रे, होता भी खतरनाक करके रखे तुमने। Billy Gerald. होता होगा ट्रिपल क्राउन है तुम्हारा, रेडन का सिंगल क्राउन। एचपी का बोला तो मैंने। अच्छा, उधर सैंड्स पे एचपी का चाहिए ना। अच्छा हाँ, वो तो बोला Human मैंने। life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. टेलीपोर्ट पॉइंट कहाँ पे है? ये वाला टेलीपोर्ट पॉइंट की लोकेशन ही नहीं समझ रही कहाँ पे। टीचिंग ने बिल्ड
केचिंग भी यूज करते थे लेकिन तुम मुंबई बीच What बीच do में you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks इसलिए मेरे को लगा delicious! केचिंग तुमने बिल्ड करी थी कि It क्या. made it sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. How would it go? Isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone. Oh, you mean the meals are random? Yes, what you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. I knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure. Excuse me, did I hear you mention Nervulette just now? I've been wondering how he's doing. He seems healthy no matter how you look at him. But he works so hard all the time, so... Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much. Oh, that's good. But I still feel बाद में like नॉर्मल अटैक को क्राउन करूंगा जमा होने के बाद. No news is टाइम good है बहुत news. उसके लिए. Maybe next time I've got something हाँ to discuss with him, I can 999 भी invite बहुत you to है, accompany us. बहुत अच्छा डैमेज देगा 9 पे भी. हाँ जब डीपीएस नहीं था तब, बट अब तो डीपीएस ही डीपीएस है. हाँ वो भी बात We है. provide all kinds अभी of तो इतने सारे कैरेक्टर हो गए products तो to उनके suit तुमको Nervulette's कंफ्यूज होगा कौन सा खेलूं कौन सा नहीं क्यों. No matter the question, you can discuss it openly in light of that. I am quite willing to go out and मेरे find पास तो अभी भी Right बस now, 2 डीपीएस है, treating you हूता two और as guests आया तो invited बस. by Monsieur Nervulette. But unfortunately, after this, you two will just be inmates here. You're very welcome. Well, your new life. Oh, Return to dormitories. Talk to the building. Higher बोल रहा है. ठीक है. दूसरा वाला टेलीपोर्ट पॉइंट कहाँ पे मुझे दिख नहीं लग रहा है. टेलीपोर्ट पॉइंट ही पहले ढूंढता हूँ मेरे को. बाद में फिर वापस स्टार्ट करना पड़ेगा. इसके नीचे बोलते हैं. इसके नीचे कुछ है ही नहीं कहीं. ये साइड पे तो नहीं है. यहाँ पे भी कुछ भी नहीं. वापस हो गए. टेलीपोर्ट पॉइंट कहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा है मुझे. मिलेगा नहीं लगता आज के दिन. The Traveler and Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble. Your bunks are right over there. Follow me. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this!
detective stories are like a dream. By the way, Traveler, we saw a lot of things, even though the Duke didn't say it too directly. Judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we are criminals. And Paimon did eat that cake. But we're out. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking? Yeah, Paimon thinks so अरे too. शैडो भाई Probably नमस्ते गुड why we मॉर्निंग came here from the very beginning. Maybe something like, hey, I have my eyes on you. So, yeah, you're right. And besides, so we at least need to try. You mean? शैडो भाई आगे 10 पुल करते हैं फिर को Fortunately, based पुल on करने his मन हो रहा attitude, मेरे को it 10 पुल सेव हो गए so hard to help clear with. Oh, right. शैडो भाई आगे मुंबई भी है तो पुल करके देखते 10 पुल में कागवा मिलता है So they could be here इसकी to तो किस्मत नहीं चलेगी लेकिन देखते फिर भी Huh? Oh, it's a card! It looks like a magician's prop. But he must. It was nice to bump into you again. Let's catch up. And what in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon's very right, if you say so. We can. शैडो यो कर दो 22 की पीटी है मेरी यू आर अप अर्ली टुडे Well, it's पाइमन Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until. Hey, come on! Hey, lazy bones! What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production. Sorry! क्या बोल रहे हैं ए 4 स्टार मिला पता नहीं सिंचू नहीं मिलने को ना मेरा सिंचू C6 हो गया हाँ दीदी 32 की पीटी हो गई अब बस काजुआ पे मेरी किस्मत ही नहीं चल रही अभी दो हो गए और 10 होने पे करते वापस आज को हो गए कल तक तो हो जाएगा शायद 10 ऐसा फार्म करते अभी कंटिन्यू हाँ कर अर्ली कहाँ अर्ली ओम भाई तुम जैसा लक नहीं चल रहा मेरा आजकल लग दो तो मेरे को थोड़ा सा तुम्हारा अरे नहीं अभी 10 होने दो शैडो भाई 10 करते हैं साथ में ना कल तक के 10 नहीं हुए तो सिंगल करेंगे थोड़ा वेट करके करते मस्त नीचे है क्या प्रोडक्शन का डायरेक्ट विवेकू नमस्ते यार मेरे बिना सारा माल उड़ा दिया काजू कतली नहीं मिली नहीं काजू कतली नसीब में नहीं लगता मेरे काजू कतली नाराज है लगता मेरे से इसलिए घर पे नहीं आ रही काजू कतली मेरे को एक ही सिंचू चाहिए C6 के लिए अरे मेरे को C6 सिंचू हो गए थे मेरा फिर भी मेरे को और सिंचू मिला है मतलब C7 सिंचू हो गया था मेरा फिर इतना खराब मैसेज चल रहा है मेरा ये बैनर पे इतना गंदा तो कभी था ही नहीं और कहाँ पे जाना पड़ता रास्ता भूल गया मैं इधर का और नीचे जाना पड़ता बोलते नीचे कहाँ से गया वो तो नीचे जाने का रास्ता कहाँ से वो गोल गोल घूम रहा मैं रास्ते का अरे नीचे कैसे जाऊँ इधर किसको पता है कि इधर का रास्ता नीचे कहाँ से जाओ तो
अरे इधर से तो आया था ना। ये लिफ्ट नीचे जाती है। अच्छा ये जाती है शायद। हाँ गो टू प्रोडक्शन। कहाँ से? वही मैं गोल गोल घूम रहा। मैं बोला कुछ आ रहा क्यों नहीं। यो शैडो भाई, नमस्ते शैडो भाई। शैडो भाई के मजे। मेरा सिंचू C24 होगा। इतना सिंचू मिलेगा तुमको। सिंचू ज्यादा ही प्यार करता लगता वीर भाई तुमको। अभी नहीं, पहले को जब मैं पुल किया था डीलुक मिला था तब की बात है। ओम भाई लिफ्ट, हाँ अभी मिल गया। वही यहाँ पे है वो टेलीपोर्ट पॉइंट। वही मैं सोच कहाँ पे तो टेलीपोर्ट पॉइंट। Go to production zone to talk to। है कहाँ पे लेकिन इधर भी शायद है। लंबी क्वेस्ट लगता है मेरे को। लिफ्ट से जाओ। हर लिफ्ट के साइड पे एरो रहता है कि किस तरफ जाता है। यस हाँ अभी मिला मेरे को। वही तो। अरे बाप रे तो गुस्सा भी होता। हाँ तब भी तो पुल तो मिलते हैं। हाँ हाँ वो भी है। लेकिन एक पुल से क्या ही फर्क पड़ता। उससे अच्छा वो कैरेक्टर दे देते दूसरा कौन सा तो उतने अपने पुलिस से हो जाते। Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the process widgets and I'll give you some जो भी नया चैनल पे प्लीज एक बार लाइक सब्सक्राइब मार देना। लंबी है। एक पुल में इतो आ गया मेरा। भाई 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 इतना इतना गंदा लक, इतना ज्यादा भी लक नहीं चलने को ना। प्लेस प्रोसेस अनप्रोसेस विजिट। क्या करना पड़ता मैं देखा ही नहीं था। So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Once the widget is hot enough to blow, jump to step on the pedal and hit the widget with the hammer. ऐसा वो क्या टाइम पास मिशन देने में। Now we can report back to the foreman. ये कभी मत बोलना एक पुल से क्या होता। Though since the processing is done by machine, अरे लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा है या हम मेरे को कुछ मिलता ही नहीं तो क्या। एक पुल में मेरा अर्ली इटो जोंगली ये याइमिको एंड C1 पिचिंग आया था। मजाक मत करो बे शर्ट भाई इतना ज्यादा एक एक पुल में। लगता है मेरी और गेंशिन की पुरानी कोई दुश्मनी है। मेरे को इस पुल में कभी कुछ देते नहीं है लोग। आई जस्ट नोटिस ये रेडन शैडो इज अनदर लेवल। कीप लुकिंग फॉर लेने इन द एरिया। लिफ्ट में तो नहीं है।
रूलिन में कहाँ खो गया? ऊपर में जाना पड़ेगा क्या? ऊपर गैलरी में जाके देखिए, ऊपर जाके देखते हैं। मजाक नहीं है, आई एम ईयर 60 प्लेयर, आई डोंट लाई। अच्छा अच्छा इधर है शायद वो। हाँ Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? यार 60 करने कितना टाइम लग गया होगा तुमको? Hey, over here. यहाँ पे मेरे को 56 करने कितने मंथ्स लग गए? Oh, you scared Paimon! How did you appear out of nowhere like that? Oh, you scare पर so रेडन का easily now? वेपन भी थोड़ा Is अर्ली there मिला था, something मुझे याद worrying you कर। these days? रेडन का हाँ हाँ बोला था तुमने। The only thing we're worried about. Sorry. लेकिन एक फूल में मेरे को आज तक क्यों नहीं मिला? एक फूल में सीधा इतना लक, Oh, एक Lynette, वीक में। you're here too. You two. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is also here. Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Now hurry up and tell us. How did you end up as criminals this time? We fought I am AR 60 player as well, but Raiden. our incredible court battle was forgotten. Sadly, even the ये teeniest नहीं defense कि वीवे commander तुमने। in prison these days. I put together a अभी नेक्स्ट street टाइम आने से ले performance and लेना, used the पहले popularity सेव कर gained लेना from the रेडन के Opera लिए। House incident to attract a big crowd. And then? मेरा 57 ईयर होने वाला है, Next, कल I हो जाएगा। invited बाप रे several भगवान audience भाई members to कितना perform. My खेले। brother was charged with theft, बाप रे and I बाप, was charged as his मेरा तो accomplice. 56 अभी हुआ। It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. Indeed. Last time I hid my identity from you, I नाइस promised that I'd tell नहीं you नाइस, absolutely ये भाई everything स्टिल you रेडनलेस No more secrets. आ So I जाएगी। don't plan on keeping रेडन का क्या है, anything बाकी तो this time कैरेक्टर है either. तुम पे इतने सारे। At the moment, the House of the Hearth's interests don't. We were instructed by the father of our वो भी house, तो the देखो mayor, बाकी कैरेक्टर to से come तुम here मजा and कर रहे यार conduct तुम an ये भाई investigation. Told you so. See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time. कहाँ खेला डेली ओनली? But recently, डेली से भी all इतने of से our हो गए तुम्हारे? informants, बाप रे बाप, और तुमने including बाकी the सब ones भी that कर had लिया been बोलते हैं ना, treated इसलिए भी हो guards, गया होगा बहुत सारा। suddenly vanished. कर दो They have सिंगल not पुल, been heard कभी from since. कभार लक सिंगल पुल We के believe रूप that पे this is आ a जाता है। direct provocation. ये देखो ऐसे Father has वेस्ट somehow करने managed बोल to रहा है मेरे को confirm शैडो that भाई, Rosalores does ऐसे not लालच have दे रहा है क्यों Fontaine's शैडो भाई? gnosis. How did she manage to learn information that important? Father has her शैडो भाई के ways. नाम पे कर दूं क्या? Many of them are beyond our imagination. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the fortress of Meropide. So it's all about the gnosis again. Well, that's about it from our side. Bingo! Minerva's been applying a lot of pressure. She wants... Traveler, are we allowed to tell them? You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be हाँ, able to कौन adjust कौन its एग्री करता stance. है कि सिंगल पुल पे 5 स्टार आ जाता है? मैं नहीं करता, मेरे को आया नहीं आज Go तक that कि far. Father just has even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Merip. As you know, the House of the Hearth has met. इतने बातें कर रहे हैं, स्किप करो इनको, बस हो See, गया। I told you. एक तो कुछ समझ में आ रहा नहीं। Lenny sees, of course he is. Lenny has been looking forward to it, or Lynette! it's okay to open up a little.
I was prepared. Since Lynette and most people just... You should be aware of that. A forbidden Good. Oh, look at the... Oh, that's just what Paimon wanted to hear! और एक विश मिलेगा मेरे को आर कॉन्क्वेस्ट खत्म होने से। सब के सब पेंडिंग है मेरे, ये भी इतना भी पेंडिंग है। फोर 4.6 में मजा आएगा बहुत। लावा वाला एरिया 5 में आ रहा है। 5 मतलब कितने आएंगे? 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और फिर 5 ऐसे आएंगे क्या भाई? रुको अभी साइड में बोल रहे थे 2 पुल कर ही लेते हैं। तो वाला है ये गया, एक दूसरा भी गया। देखो शैडो बोला था तुमको मेरे काजुआ पे लग नहीं चल रहा, बहुत खराब है ये काजुआ। पीटी अभी 34 की पीटी हुई मेरी। गारंटी कितनी पीटी पे रहती? मतलब गारंटी कैरेक्टर कितनी पीटी पे मिलता? दैट इज नटलन। हाँ वही नटलन। हाँ 4.9 नहीं है, मतलब 4.8 आएगा उसके बाद सीधा 5 ऐसा। ऊपर में जाओ बोल रही है। टेलीपोर्ट पॉइंट है क्या ऊपर में? ये ऊपर वाला टेलीपोर्ट पॉइंट है? अब नीचे में जाओ बोलो। शैडो क्या 4.9 4.8 के बाद 5.0 4.6 4.7 5.8 देन डायरेक्ट 5.0। आज तक कभी 1.9 2.9 3.9 ही नहीं था। बाप रे, अब इतना 1 से खेल रहे क्या तुम शैडो में? इतना पहले से खेल रहे क्या? You think so? मतलब गेम लॉन्च हुआ तब से खेल रहे क्या तुम शैडो में? A coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't हाय learned हाय your मजे ही lessons from your मजे। life अरे up लेकिन on ओम भाई surface. कितना वेट करना पड़ेगा If और you take मतलब things at नटलन face का। value, and by the नटलन का time मेरे को you reach a देखना है, dead मस्त end, एरिया बनाएंगे वो नया। I वो like your एरिया में मजा आएगा। attitude. I can let you in on a little something. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. But what they don't tell you is that the rules aren't exact. The truth is, this place has a lot of hidden rules. Huh? Hidden rule? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter... Really? Oh, now you're really... Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with it? In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely... Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Paimon understands, but we don't have many... Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come moreover, your new fish. Freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything, before you've gotten a handle on your new lives? Come and find me once you've been. I'm usually around the Rag and Bone shop. He left. मैं 2.3 से खेल रहा।
बाप रे, फिर भी काफी पहले से खेल रहे तुम तो। 4.8 में आएगा नटलन का ट्रेलर, मजे ही मजे। मैं 4.0 के सेकंड फेज के लास्ट मेरे को पता है, मैं जोंगली आया था तो तब से खेल रहा हूँ। जोंगली का बैनर बस खत्म होने वाला था। जोंगली का बैनर कब आया था वैसे मुंबई, याद है क्या तुमको? बस मतलब जोंगली का बैनर को बचे थे लाइक 1 वीक बचा था, तब से स्टार्ट किया था मैं। ओम, मेरा डीसी सर्वर अब कैसा लग रहा है? अरे जबरदस्त, मैं देखा कल शैडो भाई, मस्त लग रहा, मस्त बनाया तुमने, काफी मेहनत की उस पे। क्यों? फोर 4.0 में आया था कि जोंगली, फिर ओम और मैं तो साथ में ही स्टार्ट किए एकदम। लेकिन ओम का मेरे को पता है 10 दिन पहले स्टार्ट किया था ओम मेरे से। ऊपर जाओ बोलते हैं, अभी लिफ्ट कहाँ पे है? लिफ्ट। हाँ 10 दिन बचा था तब से। जोंगली का तुमने बोला था शायद तुम्हारे दोस्त ने फार्म कर दिया था तब तो, है ना? जोंगली भी मिल गया था ओम भाई को, बाप रे बाप। ओम भाई के पास मतलब जोंगली है, रेडन है, नेईदा है, फूरिना नहीं मिली। नहीं ओम भाई, तुमको फूरिना पे लक नहीं चला है बस। वेंटी तो लिया ही नहीं शायद तुमने, वेंटी कुछ काम का ही नहीं है ना। हाँ मेरे तो जोंगली है, वही तो। Choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that they weren't kidding. Credit coupons really... ये क्या है? इसको क्या बोलते, मैं भूल गया है। एलिमेंट क्या बोलते इसको? इसको भी बोलते ना इसको, इनको सपना आ रहा है शायद। ये देखो ना, काश मेरे पे कुछ कैरेक्टर आ जाए। सब कैरेक्टर जमा करके रखा है, और क्या चाहिए इसको, पता नहीं। विजन, हाँ विजन। शैडो भाई को सब पता रहता। क्यों? शैडो भाई मतलब गेंशिन का गूगल ही है, कुछ भी पूछो सब पता है, सब खबर रखते शैडो भाई। हाँ विजन, मेरे तो इसमें बोला। The vision connected child's consciousness to yours. And our investigation has its first major breakthrough. Good. So what did you see in the dream? Do you know where child went? Huh. Okay. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. What's the plan for today? Let's go. It's time to start. मेरा आईडी में मेहनत किसी और ने की, मजे में ले रहा। लेकिन तुम्हारी भी तो इतनी मेहनत है डेली कर करके। Get your butts in gear and get to work. Time's wasted. Good, here you go.
ये फिर से करना पड़ता क्या मशीन का? क्या दिमाग खराब है इसका? होल्ड टू व्यू द स्टेज ऑब्जेक्टिव. Complete the following acts during your time in the fortress of Maya. ऐसे हटा. ये करने ही पड़ता शायद पहले. Climb on speed. शैडो को पता होगा कौन है. यस, पर कैरेक्टर भी शैडो ही कर सकते हैं तुम्हारा आईडी से. ओम भाई का अकाउंट कौन बिल्ड कर रहा है? कैरेक्टर निकलने में लगता है. वीवी बिल्ड में कर रहा हो. वही तो नहीं, तुम किसको देते अकाउंट वो पूछ रहा है वीवी भाई. है कौन ऐसा सीक्रेट इंसान? Hey there, fellow shiftmates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Oh, hey there. I've seen you before. That's right. My name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess I've been working here for almost 15 years. Even the foreman... Whoa, you've been working here. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work... All right, Chief. We'll be sure to come to you first. Did you just ask about... Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me सिर्फ chief. कैरेक्टर I निकालने guess I can के tell you a की little. किसी और ने. Truth is, you two keep working like this. है कौन? अपने भाई को दिया था कि जिसको बीजीएम में अकाउंट दिया उसको. What would have happened if you never told us about this? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they... What the? How could that happen? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never... Wait, are you thinking that it was... Oh? You... Listen, kid. This ain't टीवी the kind तेरे of को thing you should भी be curious about. पता. Let me tell वो you, you're अब better off लाइव forgetting नहीं कर about it रहा है, and looking समझ after जा yourself. अब. Now I kind of regret ever telling you. भाई ओम भाई मेरे से सीक्रेट ऐसा धोखा ओम भाई हमको. Do you really want to try? मेरे को भी बता कौन है तो. मैं 1 महीने से आउट ऑफ स्टेशन था, स्टिल मुझे पता है. तुमको भी पता है क्या? मतलब मैं अकेले हूँ इधर जो पता है, जिसको पता नहीं ओम भाई का सीक्रेट. What is this garbage? Ooh, it looks What would you like to do this afternoon? Since we have time now, let's... Oh, hello. You two are the ones who were with His Grace. No need to be so... Sorry, I couldn't help but think of His Grace once I saw you, and, well, it's hard to say. Maybe I am. Wait, Well, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. What? Please, don't say anything like that out.
नीचे में भी है, ऊपर में भी है। यो बैक अरीना, बट वो तो लाइव करता है भाई। उसने 10 आवर फार्मिंग किया मेरे आईडी में रॉन्गली निकालने को। क्या बात कर रहे, 10 घंटे भाई भाई खतरनाक, पूरा डेडिकेटेड इंसान है ये तो। बेबी एरिना भाई को तो तूने फार्मिंग करते देख तूने कभी फार्मिंग करते देख? यप यप। अच्छा सीड है क्या? सीड मेरे को नहीं पता फिर तो सीड कौन I है। feel ashamed about last time. Huh? No, we couldn't take them. But when I was welcoming you, I didn't do... Come on, I insist. These coupons are nothing compared to getting the... अरे ओम भाई मैं कैमरा सेटअप कर रहा था, कैमरा लिनोवो का लेना सोच रहा था मैं। कैमरा देखना पड़ेगा लिनोवो का। ओम भाई कैमरा एक बार चेक करना तो कैसा है तो। यार अरीना बिजी बंदा है लाइक मी। तुम क्या बिजी रहते बीवी भाई? हम दोनों पढ़ाई जॉब टुगेदर। बाप रे, पढ़ाई भी जॉब भी। ऊपर में जाओ बोलते, ऊपर ऊपर। एंड नो कमेंट्स ऑन सीड, आई एम बैंड देयर। क्यों बीवी भाई ऐसा क्यों बैन? मैं भी बिजी बंदा हूँ बट अपने भाइयों के लिए टाइम निकाल लेता हूँ। ये बात शैडो भाई की बात। शैडो भाई अच्छे इंसान है, सबके लिए टाइम निकालते, खुद का काम भी करते। अरे कैमरा स्ट्रीमिंग के लिए ना, के लिए सोच रहा था। अरे लिफ्ट काम है यहाँ पे, लिफ्ट ही तो नहीं है, ऊपर में कैसे जाऊंगा? मैं कम ऑनलाइन आता हूँ अब, यू डोंट नो। आरकॉन भाई बहुत महंगा बोलते हैं। आरकॉन भाई 10,000 का 50,000 का ऐसे बोलते रहते। उनको पूछा था मैं एक बार। लेकिन ओम भाई कैमरा स्टार्ट करूँ या नहीं? लीनोवो लैपटॉप का कैमरा बोल रहे। अरे नहीं, लीनोवो का एक है मॉडल, तुमको मैं शेयर करूंगा डिस्कॉर्ड पे। वो सोच रहा था, लेकिन ये भी मैं कंफ्यूज हूँ कि कैमरा स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। मतलब अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा कैमरा स्टार्ट करना स्ट्रीमिंग पे वेबकैम? वोट दो तो क्या कैमरा स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ वेबकैम स्ट्रीमिंग के लिए। सजेशन दो मेरे को। ऊपर जाना पड़ता। अरे ओके शेयर कर देना। अरे पूछा ले, ये तेरा बजट बता उस रेंज पे। अच्छा देखता फिर। मैं YouTube पे भी बहुत चेक किया, इतने वीडियोस देखे उसके लिए। वो भी लिनोवो को ही बोल रहे थे मोस्टली लोग। अच्छा रहेगा और व्यू भी मिलेगा। हाँ फिर ठीक है, फिर स्टार्ट करता।
शैडो भाई क्या बोलते, वेबकैम स्टार्ट करना अच्छा होगा ना? शैडो का भाई का भी सजेशन पूछ लेते। मैं बोलता हूँ जब तक 4.7 का लाइव स्ट्रीम आता है तब तक कैमरा का बंदोबस्त कर सकते हैं हो, क्योंकि 4.7 का लाइव स्ट्रीम पे थोड़ा सा नटलन का ट्रेलर दिखा सकते हैं। जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। हाँ वैसे सोच के ही लेता, वैसा इतना भी जल्दी नहीं। 4.7 तक के, वैसे 4.7 कब आएगा, मतलब 1 मंथ तक में आएगा ना शायद। Let's go. Look who decided to show up. Work, time's a wasted. Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? You know, Sure. Nice! We did well today. दूसरा दिन इनका, पहला दिन होगा। Ooh, Paimon's had it. Oh, I no. knew that processing these widgets. Oh, आखिरी दिन होगा। that's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. मैंने एक कैलेंडर देख के रखा हुआ है अपने चैनल पे, जहाँ पे लिखा हुआ है कब प्री इंस्टॉल में अपडेट एंड लाइव स्ट्रीम होगा। 100% एक्यूरेट। It's just ठीक है ठीक है, मैं work चेक at करता हूँ तुम्हारे इस पे। Paimon's little body can't handle this much longer. Wait a sec. No. Oh, Paimon feels a shiver, but it doesn't seem like anything's changed at all. 4.6 के I'm हाफ heading to the में। coupon cafeteria. फिर भी मैं एक अलग से चैनल बना दूंगा उस कैलेंडर के लिए, ताकि तुम सबको स्क्रॉल ना करना पड़े। हाँ ये भी सही होगा शैडो भाई, एक ऐसा Well, इसमें डायरेक्ट इसमें बना दो, यानी डायरेक्ट देख सकते हैं, ज्यादा इधर उधर करने का Paimon काम नहीं। wonders what we'll get today. Maybe we'll get. Wait. What? What in the world is this? What's with Paimon's food? And is this stuff meat? But it looks and feels. What do you think is going on? Is this the bad thing? No, stop right there, Paimon. Gets what you mean. Just hey. Isn't that Wolfie over there? He must have made the food, but hey, Wolfie, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meals, so you better... It's about the meat in our meals. Look, The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry. how could this be fun? Hey, you! What should we do now? Wolfie wouldn't even give us the time of day. Is he trying to टैग करना शैडो कर दूंगा। Yeah, looks like... What would you like to do this afternoon? Since we have time now, let's focus on a bit... चलो फिर ये अभी बाद में कंटिन्यू करता मैं, शाम में मिलते हैं शैडो भाई, उन भाई। चलो।